Hello dear students. In chapter laser, today's topic is laser components, and these laser components part is active medium, metastable state and population inversion. So we will see one by one all these components. The first component is active medium. Now students, see this diagram. In this diagram there is a tube, and this tube is filled with medium or material, and that material is called as active medium. So in this medium laser action takes place and laser beam comes out. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, is the medium in which population inversion is achieved and लेज़र बीम कम्स आउट इज कॉल्ड एज एक्टिव मीडियम. तो वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं. द रीजन इन विच द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड is called as active medium, and the actual laser light is emitted from this region. This active medium may be solid state, liquid state or gaseous state. So here we can note that is the active medium can be solid, liquid और gaseous state. तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम अलग अलग स्टेट के. फॉर एग्जाम्पल, फॉर हेलियम नियॉन लेज़र गैसियस स्टेट, फॉर नियोडाइमियम एग लेज़र सॉलिड स्टेट एक्टिव मीडियम इज यूज, एंड फॉर डाई लेज़र liquid state active medium is used. Students, this active medium consists of 2-3 types of atoms, for example helium neon. But actually here means for laser action or for population inversion, some part or some atoms plays important role, and these atoms are called as active centers. तो वो भी point important है, वो note कर लेते हैं. The whole active medium may not take part in population inversion. Atoms which take part in laser action or population inversion are called as active center. For example, in helium neon laser, mixture of helium and neon gas atoms is active medium and neon atoms are active center. तो ये था active medium के बारे में. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मेटास्टेबल स्टेट. सो मेटास्टेबल स्टेट इज also important state. Here see this diagram, means there are 3 energy levels, 1, 2 and 3. So out of this, here one middle level is shown in this diagram as a metastable state. So here in metastable state, atoms remains for long interval of time. मीन्स एक्चुअली क्या होता है, मीन्स व्हेन एटम गोज इन हायर एनर्जी लेवल और एक्साइटेड स्टेट, देन दे रिमेन्स जनरली दे रिमेन्स ओनली फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड आफ्टरवर्ड दे गेट डी एक्साइटेड. बट देर आर सम एनर्जी स्टेट इन विच एटम्स रिमेन्स फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये सब पॉइंट हम नोट कर लेते हैं एक एक करके. तो फर्स्ट है मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम that has a longer lifetime than other excited state. Means in this state atoms remains for a long interval of time. Atoms have a natural tendency to remain in excited state for a short interval of time and de-excited to ground state. So this time interval means जो natural time interval है वो है 10⁻⁻8 सेकंड और 10⁻⁹ सेकंड. सो वो एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं. सो हियर एटम्स हैव नेचुरल टेंडेंसी टू रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड डी एक्साइट टू देयर ग्राउंड स्टेट. दिस टाइम इंटरवल इज ऑफ 10⁻⁸ सेकंड. बट हियर सी देर आर सम एनर्जी स्टेट इन विच atoms remains for long interval of time, and that is of 10⁻³ second, and these states are called as metastable state. तो वो पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. आफ्टर दिस हियर मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेजर एक्शन वो देख लेते हैं. और इम्पोर्टेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज दैट metastable state, in metastable state only population inversion is achieved. मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो स्टेट है और जो कंडीशन है
वो कंडीशन लेज़र एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कंडीशन इज अचीव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट, or stimulated emission is achieved in this state. So in laser action, stimulated emission and population inversion conditions are required. So these are required conditions, and metastable state brings atoms in this condition by retaining uh, atoms in long interval of time. तो ये था मेटास्टेबल स्टेट के बारे में. नाउ नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन. So population inversion भी simple condition है, means you can remember easily. So see this diagram, is this is general condition. Generally atoms remains in ground state or lower energy state for long interval of time, or number of atoms remains in this state, and in excited state atoms remains for short interval of time. But suppose number of atoms remains in excited state for long interval of time, or number of atoms are more in higher energy state than lower energy state, it is called as population inversion. So वो definition हम यहाँ पे note कर लेते हैं. When number of active atoms more in higher energy level than lower energy level, then that state is said to be population inversion. तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. यहाँ पे डायग्राम में मैंने जैसे बोला था, ईयर वंस अगेन सी, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ऑफ दैट एनर्जी स्टेट. मतलब कौन सा भी एनर्जी स्टेट रहने दो, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दैट एनर्जी स्टेट. एंड व्हेन atoms remains in higher energy state more than lower energy state, then that condition is said to be population inversion. तो वो explanation भी हम यहाँ पे note कर लेते हैं. The number of active atoms occupying a particular energy state is called population of that energy state. Active atom means atoms which are excited by incident radiation. तो ये स्टेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वहीं पे रेडिएशन फॉल होके वो एटम्स ज़्यादा फोटॉन्स कैरी करते हैं. सो दैट्स वाई दिस स्टेट इज वेरी इम्पोर्टेंट. हियर मीन्स पॉपुलेशन, वाई इट इज सेड टू बी पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसका एक्सप्लेनेशन अभी हम देखते हैं. लेट N1, यहाँ पे देखो 2 एनर्जी स्टेट है, E1 एंड E2. Consider that N1 are number of atoms in lower energy state, and N2 are number of atoms in E2 energy state. So here means the consider that. Now according to Boltzmann's theory, one equation is there, that is N1 is equal to N2 e raised to E2 minus E1 upon KT. So इक्वेशन क्या बताता है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई का जो पावर में E2 माइनस E1 है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. मीन्स जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स हायर होते जाते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन. तो ये कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन कहते हैं. बट here what happens means the here stimulated emission or population inversion is important stage for laser action, and it is necessary to bring atoms in higher energy state than lower energy state. When this condition is achieved, then that condition is called as population inversion. On in short, when this condition occurs, then population distribution gets inverted between E1 and E2, and it is said to be population inversion. मतलब हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम एंड लोअर एनर्जी स्टेट में कम एटम. तो ये इन्वर्टेड कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन से, एंड दैट्स वाई दिस इज वर्ड इन्वर्जन इज यूज्ड. ओके, सो ऑल दिस कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लेजर एक्शन. ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो
Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.